हेलो दोस्तों, वेलकम टू Forexraja, आपका चैनल USDINR एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। वी आर गोना बी स्टार्टिंग विथ हिंदी। तो दोस्तों, कल हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स बताए थे क्योंकि आज एक्सपायरी था। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल आज था 82.882। अगर स्पॉट इसके ऊपर रहेगा तो स्पॉट 82.92 को आना चाहिए और 82.92 के ऊपर स्पॉट को जाना चाहिए 82.97। ये हमने कल के एनालिसिस में बताया था। करेक्ट, ये लेवल्स बताया था कल के एनालिसिस में। आप जाके चेक कर सकते हैं कल के एनालिसिस। ठीक है, तो आज देखिए, बस ये लेवल पकड़ता हूँ, नीचे का लेवल्स नहीं पकड़ूंगा मैं। 9 बजे ओपनिंग होता है 82 पॉइंट, सॉरी ये कैंडल, बड़ा सा कैंडल 82.882 के ऊपर। इसका मतलब क्या है, 15 मिनट कैंडल हमने वेट किया, 82 के ऊपर ही था तो बाइंग का सिनारियो बनता है। बट दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक्सपायरी या पूरा दिन स्पॉट को 82.90 के ऊपर जाने नहीं दिया गया। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, इतना बड़ा सा, जहाँ पे 5-5 पैसे का मूवमेंट हो रहा है, एक एक कैंडल 5-5 पैसे का मूवमेंट है दोस्तों। ये है इंटरफियरेंस। ये है जहाँ पे बैंक, सेंट्रल बैंक इंटरफियर करके रेट को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये क्लियर है दोस्तों, ऐसे कैंडल्स नहीं बनते हैं। और ये भी हो सकता है सुबह के टाइम जब रेट को कंट्रोल करना होता है, तो ये भी हो सकता है। बट जो, क्योंकि यहाँ पे कम कैंडल्स हैं, मैं इसको नहीं ले रहा हूँ डेटा, मैं ये पूरा डेटा ले रहा हूँ यहाँ पे। इसको बोलते हैं कि जब कुछ ऊपर उठना चाहता है उसको गिरा दिया जाता है, ऊपर उठना चाहता है फिर गिरा दिया जाता है, ऊपर उठना चाहता है फिर गिरा दिया जाता है। ये जब बैंक्स करते हैं या सेंट्रल बैंक जब करते हैं ना, इसमें क्या करते हैं, डॉलर की सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। जब किसी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा होता है, उस चीज़ का मूल्य या उस चीज़ का जो वैल्यू रहता है दोस्तों, वो घट जाता है। वही यहाँ पे कोशिश की जा रही है 3 बजे से लेके अब तक दोस्तों। ठीक है, पर मेरा जो एनालिसिस या व्यू था वो था वेरी क्लियरली कि अगर स्पॉट 82.88 के 2 के ऊपर रहेगा तो स्पॉट को जाकर टच करना चाहिए 82.92। तो देखते हैं कि 9297 के ऊपर जाएगा या फिर से इसको कंट्रोल करके वापस उसी रेंज में, ऐसे जो जैसे ये बॉक्स बना है ना, ऐसे बना के फिर से इसको घटा के नीचे लेके आएंगे, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात ये हो गई दोस्तों। दूसरी बात है, अगर मैं 1 डे के चार्ट पे जाऊं, जिसको मैं बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा हूं दोस्तों, मेरा नीचे का लेवल जो आप सबको पता है और मैं इसको बताते ही रहूँगा, मेरा नीचे का या सेल करने का लेवल है 82.80। और जब तक स्पॉट इसके नीचे नहीं आता, मैं बाय ऑन डिप्स करता रहूँगा, ये मैंने बताया था। आप देख सकते हैं पिछले 6-7 दिनों में या पिछले 15 दिनों में या पिछले 20 दिनों में 82.80 के नीचे तो नहीं आया है। तो ये डिमांड जोन बना हुआ है, किसी मोमेंट में भी एक झटके में ये ब्लास्ट होने की चांसेस है दोस्तों। तो देखते हैं अगर इस यहाँ से कुछ बाइंग आके ऊपर जाएगा कि यहाँ पर भी फिर से वही गंदा गेम खेल के कंट्रोल किया जाएगा। ये 1 डे का व्यू है। चलिए हम करते हैं अब एनालिसिस कल के लिए दोस्तों। 1 आवर के चार्ट पे अपना 1 आवर का चार्ट लेते हैं यहाँ पे, और इस 1 आवर के चार्ट पे दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं। थोड़ा रेंज और ले लेता हूँ दोस्तों। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, कल के लिए भी आपको वही लेवल ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो मैंने कल के एनालिसिस में बताया था। वो है 82.8882। स्पॉट अगर 82.882 के ऊपर है, बाई साइड पे रही है। पता है कि मूवमेंट कभी कभी नहीं मिलता है, बट कब वो मूवमेंट मिलेगा ये किसी को पता नहीं। टेक्निकल लेवल्स पे इसके ऊपर रहेगा तो बाई साइड की ही अपॉर्चुनिटी बनती है। पहला टारगेट आपका बनता है 82.92, इसके ऊपर आपका दूसरा टारगेट बनता है 82.97,
और इसके ऊपर जाएगा 82.97 के ऊपर जाएगा दोस्तों, तो 83 के पार जाएगा। और कहाँ जाएगा ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग टाइम पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ जो आपको सहायता कर सकती है। नीचे के तरफ दोस्तों आपको एक लेवल वॉच करना ही पड़ेगा, वो है 82.85 का भी। पहले कल 82.86 था, बट आज का अगर आप एवरेज मूवमेंट देखें उसके हिसाब से नीचे का लेवल अब आ रहा है 82.85। 82.85 के नीचे जाएगा तो ही सेलिंग की सिनारियो बन सकती है, बट वहाँ पर भी आपको वेट करके देखना पड़ेगा कि 82.80 ब्रेक हो रहा है। अगर 82.80 ब्रेक होता है तो नीचे का लेवल खुल जाता है 82.72 तक। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 82.85। अगर आप सेलर हो या ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रुपी नीचे जाएगा तो ये लेवल तोड़ना चाहिए। अगर आप बाई साइड पे हो और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रुपी अप मूवमेंट जाएगा तो आपको ये लेवल वॉच करना चाहिए दोस्तों। तो ये है एनालिसिस कल के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, थोड़ा नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, और इस कठिन टाइम में जहाँ पे मूवमेंट भी नहीं है, आपका ये सब्सक्राइब करने से मुझे और प्रेरणा मिलेगी। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, welcome to Forexraja, your channel for USDINR analysis. Friends, let's see what did we say in yesterday's analysis and compare it with what happened today in the market. Friends, yesterday if you refer to my analysis, I had told you very clearly that if spot is above 82.882, I will be on the buying side. I expect the next target to be 82.92. And above 82.92 I expect spot to go to 82.97. This is what I had told in my yesterday's analysis. If you have not seen it, just go and see it so that you understand. So at 9 o'clock, what happened today? You can see this big candle, friends. Spot opened above 82.882. That means it was a clear chance of an up move, so there was a buying chance. But if you see the whole day today till 3 o'clock, okay, spot was not allowed to go beyond 82.90. That was the limit set. And after 3 o'clock, you can see here, friends, this big candles of 5 paisa movement. This movement of 5 paisa up down for every 15 minutes is what the banks and the central banks are involved in terms of controlling the volatility. Okay, you can always see all these candles are small and all these candle formations are small. Only this from 3 o'clock till now, why is this happening? Because if dollar has to move up, it will move up, but if RBI, the central bank, has to control the volatility, then you will see such big candles coming in. That itself is an indicator of intervention in order to control the rupee from getting depreciated. So remember this kind of chart pattern movement, it is not something that happens normally. Between 3 o'clock and 4 o'clock also you see that kind of a movement happening every day, but this is very less data points, so I'm not going to talk about it. But today, certainly from 3 o'clock onwards, there has been a big way to control the up move, and it's very visible over here. And it's very simple things, friends. When uh, you want to control the volatility in dollar, what RBI or the central bank does is that they increase the supply of dollars in the market. When you increase the supply of anything, the value of that particular commodity, currency, or anything will not go up. But the day your supply you don't have dollars, that day the value can suddenly shoot up, which is sometimes uncontrollable. So remember the concept of demand and supply, which is being used to control the currency from getting deflated.
That is what is happening, and that's what I'm observing, friends. If you look at the import export data of India for the last 13 or 14 months, the data is available. Go look at it. For any country's currency to appreciate, their export should have grown, but India's exports has not grown as much as what we have expected. It is good that we are doing on the good path, but it will take time. Second thing, our inflation is not yet under control, just like how US inflation is not under control. So that is also an important point that you need to focus. Third thing, India did start a very good initiative of trying to trade with Indian rupee when they import or export. They try to use Indian currency to replace it with dollar. Now, how successful that is, no one knows. But it is very clear that it is a very long task. It is not something that will happen overnight. It will take time for these initiatives to mature. But until then, looking at the current factors, dollar has an upper hand, but measures like this are being used to control it, which I don't know if it is the right way or the wrong way. I just leave it to the judgment of for the situation to take care of it. But technically, I would follow my levels that I have plotted on. Again, I will go to the 1 day chart once more. I always I've started to I look at this chart every day, friends, only for one reason, whether you know it or whether you don't know it. Okay, I tell I'm telling you certain things very clearly, but if you are a regular watcher of my videos, you will know what I am trying to say. This is the 1 day chart. Okay, what have I told day and day? Spot has to break 82.80 for me to take selling position. In the last 20 days, 30 days, 40 days, you take any number of days here, friends, spot has not broken 82.80. Whenever it comes close to 82.80, there is always some kind of a demand that comes in and pushes the dollar up, and that's what we are trying to see. So in this situation, if people are expecting that some suddenly dollar can go down to, or rupee can appreciate to 82.60, 82.50 and all, it sometimes is tough. You need to wait for some levels to break, and when things are not breaking, you also need to understand that factors might not be as convenient as it looks. So be careful in your trades and understand trends, understand support resistances before you take your decisions. That's what I would like to say. Now let's quickly go into the trade plan for tomorrow, friends. Okay, let me just take some range. All right, here. So friends, for tomorrow also, a very important range that I will watch out is 82.882. If spot is above 82.882, spot has to move to 82.92. And if it trades above 82.92, spot should go to 82.97. If it trades above 82.97, spot can go above 83. Where it will go, what will happen, I will update you on my Telegram channel. You can join my Telegram channel. The link is right below in the description. Just click the description. You will see my Telegram channel link, the free channel link. Click that, join there, and you can get regular updates on the trades that I take, and also on any movement in the market which I feel is important. I surely shall share it with you. So be a part of my community. This is on the upside, friends. On the downside, for anyone, if spot has to go below, go down, then the most important level as a support that is coming up is 82.85. Spot has to break 82.85 to go on the downside. But once it breaks 82.85, watch out for again 82.80, so that there is no reversal. But if 82.80 breaks, friends, then spot can go down to 82.72. That's on the lower side. So for those people who are expecting downside, that rupee is going to appreciate, please watch out for 82.85. For those people who expect rupee to depreciate and dollar to go up,
watch out for 82.882. This is on the upside and this is the levels on the downside. So these are the things, please watch out from a technical perspective, as it will help you in your trade. I hope you're liking the video. For those people watching video for the first time, request you to please subscribe to the channel and share the video. And it's a very tough time, friends. I need all your support, love and affection and motivation, so please do subscribe to my channel. Take care, have fun, we'll see you in the market tomorrow. Bye bye.